Hi there, Dr. Narayan again, coming to you from Neo Trader on this side of a new video. And this is a continuation video on the RSI video that I made last time. If you have not seen that yet, the links to that particular video will be available along with the details of this one. So make sure you have a look at the earlier part of the RSI video which I had made, where I have spoken about certain concepts of the RSI and also how it could be used very effectively and very profitability in Neo Trader. तो ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये सारे इंडिकेटर्स जो न्यू ट्रेडर में है और उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, उसकी उपयोग ऐसे किया जाए कि हमें प्रॉफिट की संभावना अधिक हो जाए एंड अपनी जो काम है उसमें सुविधा हो जाए. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज वीडियोस. दे आर एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पर मैं उस इंडिकेटर का बात करता हूँ, उस इंडिकेटर की जो खूबियाँ हैं जो नियो ट्रेडर में डिफाइन कर गई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ एंड थोड़े से पॉइंटर्स भी देता हूँ कि इसे आप इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करते हैं. इसमें कोई न्यूएंसेस वगैरह है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. सो दैट माय गोल इज़ दैट यू शुड बी एबल टू यूज़ नियो ट्रेडर वेरी इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू डू टू थिंग्स फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन. नंबर वन, आपकी समय में लाभ हो जाए कि यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम while doing the analysis, और आपकी जो एक्शन है वो सबसे efficient हो जाए so that you don't waste any time looking here, there, everywhere, going and hunting it on the charts and all that. So save time and act efficiently. These are the two goals of Neo Trader. So with that as the preamble for today's video, let us dive right in. आइए देखते हैं Relative Strength Index as per Neo Trader Part 2. चलिए, एज यूजुअल हम न्यू ट्रेडर खोल चुके और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वी आर ऑन द RSI पेज. इसी पेज के बारे में मैं आपसे पिछले वीडियो में बात काफ़ी चर्चा की थी. डिटेल डिस्कशन वी हैड ऑन दिस बुलिश एंड बेरिश sections of the heat map and then particularly on all those trend circles, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि हाउ दे कैन हेल्प यू प्लान ऑल योर ट्रेड्स. तो अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है तो आई वुड एग्जॉर्ट यू टू गो बैक एंड टेक अ लुक एट दैट अर्लियर वीडियो अगेन. वहाँ पर सारी डिटेल में मैंने बताया है, बट आज की वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, क्योंकि इट इज़ समथिंग अलॉन्ग सिमिलर लाइन्स दैट वी आर गोइंग टू डू. So आज जो है, since we have dealt with this page already, we'll go to the second page. यहाँ पर आप देखेंगे next to heat map is levels. तो levels को क्लिक आप करेंगे तो ये RSI Dashboard and Levels का पेज खुल जाएगा. RSI Dashboard and Levels में वही है, you can choose your universe. जैसे बाकी स्क्रीन में थे, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली टाइम विंडो का सिलेक्शन दिया हुआ नहीं है, बट व्हाट आई हैव डन ऑन दिस पेज, इसकी सारे टाइम विंडोज मैंने यहाँ लगा दिए और इसको मैंने चेंज करे बुलिश और बेरिश. सो यू कैन सेलेक्ट नाउ 30 मिनट बुलिश एंड सी देम इन यू आर सीइंग द सेम थिंग एज हीट मैप. यहाँ 30 मिनट किया तो ये सारी चीज हो गए बुलिश एंड हियर यू ऑल्सो कुड सी मल्टीपल टाइम फ्रेम. तो ये एक नजरिया था टू लुक एट द स्टॉक्स फ्रॉम अ बुलिश एंड बेरिश एंगल. आज के भी आप देखें, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द 30th of November एंड द टाइम नाउ इज अबाउट 3:20. सो द मार्केट इज अबाउट टू एंड फॉर द डे. आज आप देखेंगे कि सारे दिन में 30 मिनट्स पे बुलिशनेस इज क्लियरली डोमिनेंट. And if you increase it to 60 minute, you still see bullishness is dominant. तो ये जो breadth वाला सिलसिला है वो मैंने आपको पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन करा है. अब यहाँ पर आप देखिए, when we recorded part 1 on the day selection, bullishness was more or less equal to bearishness. But today, if you see over the past couple of days, the bullishness has increased.
That means there is a dominance of bullish names over the bearish names. So ये डे पे ये चेंज आ गया है, ये रोज आप देखते रहेंगे और इसके जरिए ब्रेथ को स्टडी करेंगे या ब्रेथ को नोटिस करेंगे तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हाउ द मार्केट इज चेंजिंग. तो वीकली मंथली तो डोमिनेंट was there, but again we see weekly में dominance has increased because the number of stocks which are bullish have increased. And monthly में तो काफी पहले से ही था डोमिनेंट. मुझे लगता है कि पहले के स्क्रीन के मुकाबले में यहाँ पर बुलिश डोमिनेंस और अधिक हो गया. सो द मार्केट कंटिन्यूज टू बी बुलिश. नाउ if you want something very specific for a stock, right, and you can put the name of the stock here, you can also find it the same. Let's say यहाँ पर कोई names है तो आप इसको लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक. यू डोंट वांट टू सी ऑल द नेम्स एट वन गो, तो आपने लगा दिया पीएनबी और आप देखना चाहते हैं कि भाई पीएनबी इज बुलिश ऑन विच टाइम फ्रेम्स. ओके, तो अगर आप यहाँ देखें पीएनबी इज बुलिश ऑन विच टाइम फ्रेम इन द आरएसआई. व्हेन यू चूज over one, there is always perhaps some issue which might happen, so you could go and hit your refresh screen once and just to make sure that there is no error, right? So we'll come back to levels and here we are going to choose Punjab National Bank. So Punjab National Bank आप देखेंगे तो it was not showing up in any. Why was not it showing up in any? Because 51 price है, 30 minute is 33, 60 minute 40, day RSI 75, daily weekly में है. तो अगर आप इसको monthly it is at 52, so it will not show. वीकली में देखेंगे तो वीकली दिखाएगा और डेली बुलिश में भी आपको it will show you here. So but if you were to check for PNB, because PNB has been recently bullish और आप इंट्राडे में देखना चाहते हैं तो इधर आपको पता चलेगा कि PNB is not bullish, right? ये सिंगल स्टॉक में भी देख सकते हैं. इसका उपयोग कहाँ आता है? When you have your own list, right? Your own list can be saved into a watch list. Okay, so watch list का जो बटन है वो यहाँ पर है. You can look at all the watch lists. Otherwise, you can create a watch list from a whole set of things. We have a separate video on watch list. So please do check out the video on watch list to know which are the stocks. अभी अगर मैं देखूं, I want to see something which is bullish on all time frames. इसका ये मतलब है सारे 5 जो सर्कल्स है हीट मैप में कहां पर ग्रीन है. तो मुझे तुरंत मालूम पड़ रहा है कि ये 5 स्टॉक जो है अपोलो, बेल, क्यूमिन, एस्कॉट्स एंड एमआरएफ, these are 5 stocks where the RSI is bullish on all the time frames, 30 minutes through this. Now what you could do is you can make a shortlist of this, right? तो आप इसका एक shortlist बना दीजिए तो you can have this as your bullish list. फिर इस शॉर्टलिस्ट को आप कोई भी और पैरामीटर या कोई और टेक्निक पे ले जा सकते हैं जहां से आप इसका दूसरे वैल्यूज दे सकते हैं. जैसे आप इसको इचिमोकू में ले गए या आप इसको हाइकेनाशी में ले गए या आप इसको एडीएक्स में ले गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अदरवाइज इफ यू हैव समथिंग व्हिच यू हैव मेड अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग हियर कॉल्ड एडीएक्स सीपीआर बुल. ओके, सो मैं यहाँ लिस्ट डालता हूँ ADX CPR bull and then I am looking at something there where none of them are available here. So this is something that you may want to check. एक बार मैं स्क्रीन भी रिफ्रेश करके देख लूँगा just to make sure that there is there is no error. So let me go back to ADX CPR bull. ADX CPR bull में ऐसे ही करता हूं तो I am actually getting here 4 stocks where it is bullish in some parameter. Okay, so if I choose only 30 minutes, then it is showing me Reliance and McDowell.
If I choose 60 minutes, then it is again showing Reliance and McDowell. That means on intraday basis, Reliance and McDowell are showing ADX and CPR signal. Now they are also showing RSI signal. This way you can combine the signal. तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो रीडिंग है that becomes firmer. You can be more confident कि इसमें जो सिग्नल है रिलायंस और let's say McDowell में जो सिग्नल है वो ADX and CPR level 1 and intraday RSI signals, all of them. अभी देखिए अतुल भी ऐड हो गया, ये कॉन्स्टेंट रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि मार्केट अब भी लाइव है. सो this is actually got added. So 60 minute is bullish in all of them, right? 30 minute is bullish in Reliance and McDowell. So we have got 60 minute checked here. So that is why it showed up here. तो अगर मैं इसको हटाऊं और मैं अगर चेक करूं कि डे बुलिश में कौन सा है, तो यहाँ पर Reliance McDowell is still showing in day bullish also. So 30, 60 and day Reliance McDowell. पर HAL जो है वो डेली में bullish है, वीकली में है, और ये है. I have check marked only daily. If I put weekly, also HAL will come, and if I choose monthly, also HAL will come. So if I remove this and I look at only weekly, then weekly is the only stock among that list, watch list, which is showing you bullish RSI signal as well. And if I were to look at monthly, then from this watch list, I have got HAL and McDowell. So there seems to be suddenly some amount of movement which is going on in McDowell. And therefore, if I look at all of them, right, then I have this thing, McDowell, which is seen on all of these, right? And if I were to check off this thing, I also see McDowell. The other way of this is when you have a big list. Suppose you got only McDowell, then you can simply look at this line here and get an idea कि McDowell जो है 30, 60 daily and monthly, not weekly. तो मंथली में ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन हुआ था. उस रिएक्शन के बाद स्टॉक has had a turnaround, and that is why you are seeing McDowell which is moved up like this. Now whether it is indeed like this, we can go and maybe check in a chart. Let me see whether I will open the trading view chart just for reference so that people can get this in clearly, and I should be able to. Okay, this is on. I will put in here trading view, and in trading view, if I go and take a look at a chart. So here is a chart. Now let me add, let me get rid of all of this, and then I will put McDowell, and that is McDowell United Spirits, and I will take it to 30 minute, right? And we shall add RSI, so relative strength index, and our line should be set at 14, and our line should be set at 60, and then also at 40, because these are our definitions. Let me just make this RSI line a little darker so that you are able to see it. Okay, so this zone is the 60-40 zone. So you can see that United Spirits today was under 60 and has moved above 60 and started moving up. If you go and check the 1 hour chart, again, here is what it has done. It was already moved up yesterday. You can see that it was under and it has started moving up yesterday. If you look at monthly, now monthly McDowell has been above 60 since this month, which is actually September. The whole of September, October and November, you have United Spirits staying bullish. But if you go down to weekly
And weekly United Spirits had not picked up that much amount of strength that it should have ideally done. That is because most of the time the stock has been under consolidation, even though on a small basis it kept moving up on the monthly charts. That's because there is a very gentle move up here. आप यहाँ देखेंगे, this is जून का बॉटम से लेके या यहाँ पर देखेंगे आप, दिस इज अबाउट अगस्त से लेकर के एक वेरी जेंटल अप ट्रेंड इज बीइंग एसेड. इसके कारण है कि मंथली में धीरे धीरे अपटिक आ गया, और मंथली में क्योंकि ये जो अप ट्रेंड था दैट वाज स्ट्रांगली बुलिश, वो अगर उसकी जो होल्ड थी वो सिंस दैट डिड नॉट ब्रेक, राइट, and it moved up from here in the month of August, and then a small reaction was seen here and it has picked up again. The same thing you can see on the daily charts, that it had slipped into a reaction when the market went sideways. आप ये देखिए मोमेंटम इंडिकेटर में मार्केट को नीचे जाना जरूरी नहीं है फॉर मोमेंटम इंडिकेटर्स टू लूज देयर वैल्यू. सी, मोमेंटम इंडिकेटर का प्लॉट will fall when there is a lack of momentum. ठीक है, so lack of momentum will also be a sideways situation. तो sideways हो जाएगा after a gain, then also momentum indicators will fall. So when you see that ये कोई specific time frame में, for example यहाँ जो है कोई specific time frame, HAL on 30 minute is at 54, 60 minute is at 54, and the day, the week and the month are okay. So it will show you that HA is probably undergoing sideways in a much shorter time frame. आप यहाँ पर उसके चार्ट में देखेंगे आप, I will put HAL and Hindustan Aeronautic, and if you look at the prices, they are, they are moving sideways. When they move sideways, what happens is in the 30-minute chart, when they move sideways, the momentum will start drifting down. तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि when you look at Neo Trader through these tables or through the heat map or using the multiple the time frame trend circles, you will not need to look at a chart at all. The entire story is right here in front of you. Looking at this, I already told you that HAL is undergoing a reaction in the shorter time frame, and that is why the 1 hour is also gone down. You see the last 2 days, what's it doing? It's doing nothing for 1, 2, 3, 4, 5 days now. HAL 5 days से कुछ नहीं कर रहा है, so it is starting to slide. तो अब आप if you start seeing the daily RSI, that has also started to flatten. But daily RSI के जो levels है, that had reached higher levels of maybe 66, 70, 75 and all that possibly. Let's see, where had the daily RSI gone to? The daily RSI had gone to about 67 or 68, even 68 half. And then this 3 days of consolidation. यहाँ पर देखिए price loss बिल्कुल ही नहीं है, right? The stock is in a sideways range, but price gain भी तो नहीं है. When you look at RSI is an average between prices gained on every day divided by the amount of price loss, right? So that is how the momentum is measured in the RSI, and this is passed through a formula which normalizes it to lie between 0 and 100 value, and it has given also a boundary like that. So by looking at the RSI table here, you will get a very good idea that higher time frames in HAL are strong. तो अब इसको एक्शन कैसे किया जाए? You are interested in HAL and you are finding that it is non-bullish in the lower time frames. But as soon as either 30 minute goes above the level of 60 or 60 minutes goes above the level of 60, you know that the shorter time frames are also getting aligned with the larger time frame. And when that happens, that will tell you about the resumption of the trend. और जब ये सिग्नल आपको नियो ट्रेडर में दिख जाएगा, तो आप समझ जाओ कि चार्ट में भी एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट की तरह खड़ा हो जाएगा यहाँ पर. अभी आप देख रहे हैं कि चार्ट पे ऑल अनसर्टन कैंडल्स है,
तो जब आपका 30 मिनट RSI और 60 मिनट RSI will also bounce up above 60 and start recording values more than 60, तब आप चार्ट में जा करके देखेंगे तो आपको मोस्ट डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल आपको मिलेगा। तो नियो ट्रेडर में आप कई हद तक अपने चार्ट रीडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई कंफर्मेशन की जरूरत पड़े तो आप अपना चार्ट साइड बाय साइड खुला रखिए और वहां देखिएगा। What many people are doing is they are looking at the chart and they are coming to software like NeoTrader, the few which are there, and to get some sort of a confirmation. But I am telling you that is an inefficient way of doing it, because with NeoTrader you will be able to spot the signal across the board in a lot of stocks, right? If I were to look at this, I can spot changes in across these 5 stocks. Now these are 5 stocks in this watch list. अगर मैं ये watch list हटाऊं और यहाँ पर मैं एक let's say I'm choosing Nifty 500. So when I choose Nifty 500, then I know that there are so many stocks here which are all showing me various kinds of signals. So this is one way of seeing the actual values. तो मैंने आपको पिछले टाइम मैंने हीट मैप दिखाया which is the same depiction, right, but in the form of name only, not levels. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि DLF is bullish in the 30 minute, but it is neutral in all the other time frames. So DLF may not be a swing trading candidate, multi-day trading candidate, because it is showing you this only in one time frame. अभी आप एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक इज इन वन टाइम फ्रेम, देन इट इज ऑल्सो इन द 2 हायर टाइम फ्रेम्स, राइट, वीकली एंड मंथली। तो इसका ये मतलब है कि आफ्टर अ बिग राइज विच इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, वेयर द ट्रेंड इज नॉट डिसिपेटेड, देयर हैज बीन अ करेक्शन इन एक्सिस बैंक विच पॉसिबली माइट बी टर्निंग टुडे। चलिए हम एक्सिस बैंक के चार्ट देखते हैं, वेदर दिस इज हाउ द चार्ट इज पोजिशन। सो हियर इज एक्सिस बैंक and let it load. So when you will see, yeah, there you go. In Axis Bank you had a big drive up. इसके कारण weekly और monthly RSI went into overbought and they have stayed above 60 level, showing you that the uptrend is still on. But उसके बाद आप देखिए यहाँ पर about 2, 4, 6, 8 and 10 days of reaction was there. When you had about a 10 days of reaction, and this is about 38% retracement also, that is where the weekly and the 30-minute chart underwent daily also. I think the daily, the hourly and the 30-minute underwent a movement which moved out of the positive. Now when you see the prices have moved up again, and we are looking at the chart on the daily time frame, as the prices are moving up again, they are still contained in the same zone where it is still in the reaction zone. That is why the other time frames have not looked up yet, but this consistency has now led to, if you see the 30-minute chart, there is now an improvement. और इसी improvement को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जरिए कि भाई RSI has turned green. अब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो आप लेवल्स पे चले जाइए और वहां आप एक्सिस बैंक ढूंढेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि RSI has gone above 60. ये जो 60 मिनट 1 आवर RSI दैट इज ऑलमोस्ट एट 60, 59.96, मतलब करीब करीब ये भी टर्न हो गया। तो ये दोनों टर्न हो गए, डेली भी 68 है, 65 एंड 63. सो ऑल 5 टाइम फ्रेम्स, इफ टुमारो एक्सिस बैंक इज अबाउट 900 rupees, then all time frames will be in the green, and then you may definitely look at it as something which has completed a reaction and started a fresh uptrend. So that is how you can plan your trades. You can get the exact levels, you can get the trend levels, you can get the breadth levels. So market की रीडिंग आ गई breadth के जरिए, dominance of bulls and bears की रीडिंग आ गई, multiple time frame की bullishness bearishness के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो भी आपको मिल गई हीट मैप के जरिए। अब आपको एग्जैक्ट लेवल्स के अनुसार आप प्लानिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप आपके जो स्टॉक्स आप जो देखना चाहते हैं उसको कई हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, बाय लुकिंग एट ओनली
30-minute bullish or 30-minute bearish. Let's say what has become bearish today. तो मैं अगर डालता हूँ 30-minute bearish today, then there are all these stocks which have become bearish. Because if you see IndusInd Bank is quite bearish, and it is bearish in 30, it's bearish in 60, it is bearish in daily, and it is bearish in monthly. That means IndusInd Bank is not a stock you must trade bullish at all. ये केवल वीकली RSI थोड़ा बहुत होल्ड आउट कर रहा है और उसका वैल्यू भी 62 है. RSI ऑन 30 मिनट आप देखें तो वो ओवरसोल्ड की तरफ पहुंच गया है, 33 लेवल्स पे आ गया है. यहां से और भी इट इज पॉसिबल फॉर इट टू ड्रॉप, बट देन IndusInd बैंक इज नॉट अ बुलिश स्टॉक. तो अगर आपको बैंकिंग में कोई ट्रेड लेना है तो देन इट हैज टू बी एक्सिस बैंक एंड नॉट IndusInd बैंक, राइट? सो यू मे mark. Now let's see which is the stock which is bearish on all the time frames. Now when I mark all the 5, there isn't any. So if I were to look at something which is bearish across 30 and 60 minutes, then I would probably get all of these names. LTI देखिए काफी ओवरसोल्ड पे आ गया है, PNB ओवरसोल्ड पे आ गया है, वोल्टास ओवरसोल्ड पे आ गया है, वोल्टास के. बट यहां पर आप देखेंगे सिर्फ PNB इज होल्डिंग अप 70. सो इसमें बेरिश होने का गुंजाइश एकदम कम है. सो आपको PNB में ध्यान देना है. एज सून एज इट रिवर्सेस and the 30-minute time frame changes to green or moves above 40 and then progresses and goes above 60, this will become green in the circle and it will start featuring in the bullish list. अच्छा, तो ये हुआ bullish और bearish के list के बारे में. अच्छा, आप अगर देखना चाहेंगे कि this change now, this is another feature that I have added. If you want to see, now for example, this Adani Ports is here. Now this may have changed at 10 o'clock in the morning or 12 o'clock or yesterday or day before or any of the time. You don't know when it is unless you go to the chart and see which was the exact time period when it changed. But supposing you want to look at all the changes which are happening now, right? So if you click on 30-minute change now, which means that all of these have had a change either bullish or bearish right now. So अगर आप देखेंगे ये बजाज ऑटो जो है वो this is moved up to 57.9 or it may have moved down to 57.9 from a previous reading. So there is a change which has happened now. So you can go here and see whether there is any change which has happened in the 60-minute time frame. तो यहाँ 60-minute टाइम फ्रेम में ये 59.96 अभी आज बढ़कर आया होगा. सो यू विल बी एबल टू गेट, एंड इन दिस व्हाट यू कुड डू इज यू कैन सिंपली सॉर्ट कि भाई व्हाट हैज चेंज नाउ टू बुलिश. तो इट विल गेट सॉर्टेड. समथिंग विच हैज चेंज नाउ इन द 60-minute टू बुलिश इज सन फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, आइडिया. सो ऑल ऑफ दीज यहां पर जो है तो ये सॉर्टिंग कर लीजिए. यहां पर 60-minute चेंज नाउ कर लिए, या आज विच आर द स्टॉक्स विच चेंज टुडे इनटू बुलिश. प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस आर अनचेक्ड व्हेन यू आर लुकिंग एट चेंज नाउ. चेंज नाउ में जब भी आप कोई भी काम जब कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर कि बुलिश और बेरिश लिस्ट के ये जो बॉक्सेस है वो अनचेक्ड रहे, वरना वो सिग्नल्स क्लैश हो जाएंगे और आपको ठीक से आउटपुट नहीं मिलेगा. तो डे चेंज नाउ में आप अगर आए तो दिस इज डे चेंज. सो यू सॉर्टेड बाय डे चेंज. तो डे चेंज में दी स्टॉक्स लाइक हैट्सन एग्रो, सेंचुरी प्लाई एंड ऑल, दे हैव एक्चुअली गॉन फर्दर डाउन. व्हाट हैज गॉन अप? सो लेट्स सी, वी विल सॉर्टेड दिस. GMR Infra is something which has moved up nicely today because there is a day change up. So if you go and see GMR Infra as a chart, GMR Infra, this is what it is, right? GMR Infra. Okay. And I will put it into day. Now look at this change in the RSI and look at the price action. So when you are wanting to look for specific changes
एंड दिस इज यूटिलाइजिंग द होल NSE 500. तो आपको डायनेमिकली स्टॉक सिलेक्शन करना है कि व्हाट इज इन ऑन द मूव नाउ. अब इस टाइम फ्रेम में किस स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, तो आप ये चेंज नाउ की सिलेक्शन पे आइए. 30 and 60 will give you intraday, daily change will give you versus the previous day कहाँ पर बड़ा चेंज आया है. तो मैंने आपको अभी स्क्रीन में दिखाया कि ये देयर हैज बीन अ लार्ज डे चेंज. अगर आप देखेंगे लॉरस लैब यहाँ पर 32 आया है. नाउ व्हाई इज इट फीचर्ड इन दिस? बिकॉज लॉरस लैब में काफी बड़ी गिरावट आई थी कल. Because Lotus Lab was something which I think Kotak Securities came out with uh, sell report and gave a target at about 350. उसके पीछे काफी गिरावट आई and yesterday the stock turned kind of bearish. But today Kotak, that effect seems to be over and the stock is staging a bit of a rally, and that is why it managed to get caught in Lotus Lab. But you can see that the value is 32, so it is oversold. Now, if you're bullish on Lotus Labs for any reason, आपने ये कोटक की रिपोर्ट पढ़ा, उसकी जो इफेक्ट आनी थी मार्केट में वो भी आ चुकी, and then you are liking that I would like to buy Lotus Labs at a low rate, then this will alert you कि भाई आपके जो चाहिए स्टॉक है उसमें ओवरसोल्ड एरिया से थोड़ी सी अपवर्ड ट्रैक्शन आई हुई है, तो आपको उसमें नजर देना है. सो सिमिलरली इफ यू लुक एट लेट्स से सन फार्मा हियर, राइट, HCL Tech, oh sorry, Sun Pharma is what we were looking at. Sun Pharma, now if you look at it, it has gained today, it went up, right? This is the daily chart. So the RSI ticked up during the day and then towards the end it has fallen, right? So but even then it is still a decent amount. See, although the closing of today may be lesser than the closing of yesterday, you have to remember कि RSI is derived from a 14 period averaging. तो ये 14 days का एवरेज से लिया होगा, और 14 days के एवरेज से आप देखेंगे मुकाबले में today's close is still higher. तो इसीलिए RSI तो रहेगा ऊपर, बट कल के मुकाबले में थोड़ी सी गिरावट है. सो इट इज स्टिल मेंटेनिंग द लेवल अबाउट 70. सो दीज आर द वेरियस वेज टू यूज दिस चेंज नाउ, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस टाइम फ्रेम में देखना है, आप यू विल बी एबल टू डू इट. Okay, so now these are the 3 columns which are there in levels, which can be used to fine tune the kind of stocks that you want to see, the kind of movement that you want to catch. अच्छा, इसको एक और भी आप यूज जरूर कर सकते हैं. सपोजिंग यू वांट टू ट्रेड ओनली बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग, तो वो भी इसमें पॉसिबल है. तो आप ये लिस्ट ले लीजिए, बड़ा निफ्टी 500 ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल. तो और वहां पर आप यू वांट टू बाय, यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप एक वीकली बुलिश पे लगा दीजिए. तो वीकली बुलिश में बहुत सारे नाम आएंगे आपको, because you have chosen a 500 का लिस्ट, राइट. और इसको आप जाके वीकली बुलिश में सॉर्टिंग करा दीजिए, राइट. नाउ दिस since you have chosen weekly bullish, it will start showing you only from 60 onwards. 60 के नीचे जो RSI रीडिंग है वो स्टॉक्स तो ये लिस्ट में आएंगे ही नहीं. सो दिस इज वन वे ऑफ स्ट्रेट अवे एलिमिनेटिंग. अगर आप चार्ट के जरिए ये करना चाहेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा. यू विल प्रोबेबली नीड 2-3 hours to go over this Nifty 500 list, so it's quite difficult. So अभी आप इसको फिर से हाई टू लो में शॉर्ट कर लीजिए. अभी आप यहाँ देखेंगे तो मजगांव डॉक का वीकली RSI has gone to 93. नो डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत गर्मी है, एवरीबडी इज बाइंग इट. और आपको अगर आज ही न्यूज मिला मजगांव डॉक लेने का, यहाँ पर आके देखें 93 RSI में इसका बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनता, मोस्ट डेफिनेटली नॉट. सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन, ठीक है, आपको कहाँ आना है, देन यू गो टू द नेक्स्ट पेज एंड ओके, लेट मी जस्ट पुट ऑफ द रिफ्रेश बटन सो दैट इट विल स्टॉप रिफ्रेशिंग. तो मैं इसको RSI I will from high to low, or you can also do it from low to high.
तो ये सब जो स्टॉक्स है विच हैव टर्न्ड बुलिश इन वीकली एंड मे स्टिल हैव रूम टू गो अप. So let us use this list, or you can go directly to the level of the RSI that you want. Let's say you want to look at not 60, but you want to look at RSI which is at about 65. तो ये आप बटन पेजेस से आगे जाइए तो यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 5 में, तो आप देख रहे हैं कि 65 से अधिक जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर है. तो अपोलो टायर है, वरुण बेवरेजेस है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ लुक एट वरुण बेवरेजेस, that is the stock VBL. You can see, look at that movement which you have got in VBL today, right? And that is why the weekly RSI is also showing you a movement above 65. So you can come to your investment grade stocks like this. या ऐसे आपको स्टॉक्स जो शॉर्टलिस्ट करना है उसको आप यहाँ से टिक मार्क करिए. अगर टाटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रेडिंगटन नहीं करना है, आरबीएल बैंक करना है तो ठीक है, वो भी कर लीजिए. एंड देन एंड गो एंड से ऐड टू वॉच लिस्ट. ऐड टू वॉच लिस्ट कर लिया तो यू से क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट एंड हियर यू कैन गिव सम नेम RSI 65 प्लस वीकली. ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली. तो ये एक हो गया RSI 65 प्लस. अभी मैं I have made only some 2 or 3, right? So let me go and add some more stocks in this, and then I'm finding it okay, RCF and whatever, L&T, RHI Magnesita, SKF India, all of these. ठीक है, तो मैं deliberately वो futures के stock नहीं ले रहा हूँ, just because you will see it. And here I say add to watch list, so I'll say add to this watch list, so that has been added. तो अभी आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? If you want to do this, go to the selection here, go to your let's say go to your multi-day play, right? तो multi-day play में आप अगर select करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा multi-day plays है. तो यहाँ जा करके आप अपने वॉच लिस्ट खोल दीजिए. I'll have to do one refresh so that watch list will show up here. When you add a new watch list, just do a refresh, right? So you're on a multi-day play. So if you see here, I have got here RSI 65 plus weekly. So when I look at RSI 65 plus, VBL is already on. See, it has come here. 3011 पे वो आ चुका. आपने जो मार्क किया 2811 से अपोलो टायर थे, आरबीएल बैंक पहले से है, और ये जो ब्लू में मार्क किए हुए हैं दीस आर सुपर क्यूरेटेड ट्रेड. सो इसमें आपको ट्रेड जरूर लेना चाहिए. आरसीएफ भी यहाँ शामिल है. ऑलरेडी 25 अक्टूबर में आया था, वो T3 मेट हो गया, T3 मेट हो गया. RBL Bank is T1 met, Apollo Tyre is recent 2811, and today VBL has come 3011. तो जो भी आपके लिस्ट में से स्टॉक यहाँ शामिल होंगे उनको खरीद लीजिए. उसमें सक्सेस की संभावना बहुत ही हाई है. आई वुड पुट दैट as high as 70-80% can be your success rate with this kind of approach for doing investment. So whether you want to do trading, whether you want to do end of day trading, multi-day 3-4-5 trading, multi-week trading, positional play, investment, न्यू ट्रेडर इज फॉर एवरीबडी. आप जैसे काम करना चाहेंगे, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डे ट्रेडर हूँ या सिर्फ मैं मल्टी डे ट्रेडर हूँ. अलग अलग समय पे मैं इन्वेस्टर भी हूँ, मैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग पुल इन्वेस्टर भी हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ. And that is the beauty of the market. Market allows us to do anything that we want in the way that we want to. और इसके लिए सबसे उपयोगी औजार है न्यू ट्रेडर, because I have programmed it in such a way that it can be useful for everybody, from the fastest day trader to the longest investor. सब लोग इसके साथ काम कर सकते हैं. अब न्यू ट्रेडर इसका एक नाम रखा गया है. इसका ये मतलब नहीं है
कि ये सिर्फ ट्रेडर के लिए, और असल में देखा जाए ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब जो है ना, इट रिफर्स टू द टाइम फ्रेम. Trading is commonly understood as something which you do in the shorter time frame. Investing is understood as something which you do in a longer time frame. Ultimately, you are doing the same thing. You are buying a stock and you are selling a stock. That is what you do, right? When you invest or when you trade, the action is the same. In trading, there is additionally, you can sell a stock first and buy it back later, which is not possible in investing in a smaller time frames. ठीक है, तो ये मेनली मुझे दिखाना था आरएसआई में. मैंने अभी आरएसआई का बारे में तो आपसे चर्चा तो खूब की है, और आरएसआई के एक दो न्यूएंसेस भी बता दिए, और पर्टिकुलरली मैंने आपको न्यू ट्रेडर के जरिए आरएसआई को इफेक्टिवली कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं और उसको ट्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है अक्रॉस 2 वीडियोज़. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डू राइट इन टू अस. हमारे ऑफिस के लोग से संपर्क करिए. सेंड इट इन थ्रू अ ईमेल, सेंड इन अ चैट. प्लीज फील फ्री टू कॉल अस. वी विल बी हैप्पी टू आंसर. एंड दिस इज द पार्ट आई वांटेड टू शो यू इन पार्ट 2 ऑफ द आरएसआई वीडियो. तो ये रहा दोस्तों आरएसआई पार्ट 2 यूजिंग न्यू ट्रेडर. I hope you enjoyed viewing and listening to the various points made about how to use RSI effectively. और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी इस वीडियो के ज़रिए कोई लर्निंग ज़रूर हुआ होगा, जिसके ज़रिए आप इस टूल को, इस इंडिकेटर को और एफिशिएंट तरीके से आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे और इससे लाभ भी पा सकेंगे. वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आशा करता हूँ कि हमारे जो अगले वीडियोस बनेंगे, चाहे वो आरएसआई पे हो, चाहे कोई और इंडिकेटर पे हो, या कोई और फीचर हो न्यू ट्रेडर को लेकर के या टेक्निकल्स को लेकर के, आशा करूँगा कि आप उसमें भी हमारे साथ शामिल रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, and so that you will be kept intimated about various new videos that we put out. Thank you once again. This is Dr. C.K. Narayan signing off.